Don't study until you get it right. Study until you can't get it wrong. Hello everyone. Welcome to the River Classes. My name is Ritu. Today we will discuss about periodic properties. Do you know how many elements are known till date? At present, 118 elements are known to us. So around the year 1800, only 30 elements were known. सो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे वैसे वैसे साइंटिस्ट जो थे वो चाह रहे थे कि सारे एलिमेंट को एक अच्छे तरीके से अरेंज कर सकें और उस ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को समझ सके. सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन दियर प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड study such a large number of elements. In 1870, a German scientist, Top Reiner, started to arrange the element with similar property. So he divided the elements into group of 3 and named them traits. For example, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक पहला ट्रेड्स लेते हैं जिसमें कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये 3 एलिमेंट्स थे. तो इन दिस एलिमेंट जो सोडियम का एटॉमिक मास था वो इक्वल होता था लिथियम और पोटेशियम के एवरेज मास पर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखा जाए तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है लिथियम 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39. If we add atomic mass of lithium and potassium, suppose 7 plus, तो जब हम 7 प्लस 39 करेंगे तो टोटल इक्वल टू ये 46 और इसका एवरेज निकालेंगे तो वो 23 हो जाएगा. इस मीन्स दैट सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट the atomic mass of the middle element of trait is the arithmetic mean of the atomic mass of the other two elements. But due to various limitations, their law was not accepted. In 1866, when 56 elements had been discovered, Newland, an English chemist, discovered a law named Newland law of octaves. These laws state that if the elements are arranged in order of increasing atomic masses, the property of every eighth element repeats. But this law was correct only for 17 elements. Hence, this law was not found to be useful. Then after the rejection of Newland's law of octets, in 1869, when 63 elements had been discovered, a Russian chemist Mendeleev discovered a periodic table of elements, which is called its Mendeleev periodic table. Mendeleev arranged elements in horizontal and vertical column of a table in order of their increasing atomic weight. He was also nominated for Nobel Prize, but he died before the ceremony. So after all these laws, in 1913, Henry Moseley stated that atomic number is better base for arranging element in table. Soon, Mendeleev periodic table modified into modern periodic table. So, this is a modern periodic table in which the 7 horizontal rows, which is called periods, and vertical columns, which is 18 vertical columns, which is called groups. So these 18 vertical columns, which is called group, it is determined by the number of electrons present in the outermost cell. This long form of the periodic table divided into 4 main blocks. First is first group element, which is known as alkali metal. Group second element, which is known as alkaline earth metal. So from group 13 to group 18, these elements are called p block element. Why this is called p block element? These elements in which the last electron enters the p orbital of their outermost energy level are called p block element. And the group first and second
are called as s-block elements. Why this is called s-block element? Because the element in which the last electron enters the s orbital of their outermost energy level are called s-block element. From group 3rd to group 12, these elements are called d-block elements. Why this called d-block elements? Because the element in which the last electron enters the d orbital, so these elements are called d-block elements. F-block elements are those elements which last electron enter in the f orbital. So these two columns are F-block elements. There are two series in F-block elements. The first series started with a lanthanum, so these series are called lanthanides, and second series started with actinium, so these series are known as actinides. And the D-block elements contains 3 complete rows of 10 elements, which involve the filling of 3d, 4d and 5d orbital. Group 1st, 2nd and group 13 to 18 represent the main group element. Group 3 to group 12 are represent as transition metals. तो ये तो हो गया कि क्या कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में होते हैं और कैसे होते हैं. अब कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि वो मेटल्स होते हैं कौन से एलिमेंट्स और कौन से एलिमेंट नॉन मेटल्स होते हैं. As we know that metals are usually solid at room temperature, it is a good conductor of heat and electricity. It usually high melting point and boiling points. और जो जितने भी मेटल्स होते हैं इन पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो सारे राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे क्या हैं नॉन मेटल्स है. सो दिस मीन्स दैट इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. The elements which are present in this zigzag line are called metalloids. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों तरीके से बिहेव करते हैं. तो जो ये zigzag लाइन जो है वो ये जिसमें जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं. जितने लेफ्ट साइड हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं और जो राइट साइड है वो सारे नॉन मेटल्स हैं. और इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड if we move from top to bottom metallic character increases. So ये सब तो मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हो गई. अब इसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे. होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.